जब हम स्टॉक मार्केट से रिलेटेड टॉप बुक्स की बात करते हैं तो इस बुक का नाम जरूर आता है व्हाट वर्क्स ऑन वॉल स्ट्रीट। इस बुक के ऑथर जेम्स पी ओशॉनेसी ने बुक में कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज को एक्सप्लेन किया है जिनकी हेल्प से आप स्टॉक मार्केट में अच्छे रिटर्न्स अर्न कर सकते हैं। इसलिए आज के इस वायरल रिएक्ट में हम जेम्स पी ओशॉनेसी की एक टॉक से कुछ क्लिप्स सुनेंगे। ये टॉक उन्होंने गूगल द्वारा होस्टेड टॉक्स एट गूगल नाम के इवेंट में किया था। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करिए और इस वीडियो को लाइक करिए, क्योंकि हम हर हफ्ते ऐसा कंटेंट लेके आते हैं जो आपको एक बेहतर इन्वेस्टर बनने में और वेल्थ जनरेट करने में हेल्प करेगा। तो चलिए सबसे पहले हम उस वीडियो क्लिप को देख लेते हैं और उसके बाद हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। And there's a bias in behavioral finance called the recency bias. And we are all subject to it. Everyone in this room, everyone on this campus, everyone in this state, in this country. Recency bias simply says we pay the greatest attention to what has happened recently. And then to compound our error, we forecast whatever has been happening recently into the future. A very, very bad mistake to make. So, I'll tell you about something I did that demonstrated recency bias. So when I was a young guy and beginning to look into why stocks did what they did, and a big believer in factors underlying things like PE ratios, dividend yields, etc., I had a cousin, Jerry, who is a true wild man, and he had called me on the phone. He goes, "Jim, you've got to get into this stock, right? This thing is going to explode. It's going to get taken over. This is my industry. I know it. This is fantastic." So what did I do? I bought it. Of course, I bought it. And I looked it up in the newspaper every day. And I was a little put off by the fact that rather than going up and up and up, it went down and down and down. So I kept calling Jerry. "Jerry, what's going on? You told me." "Don't worry about it. They've delayed the announcement. You know, it's going to come out. Just keep on buy it. Buy it. You can't lose." Anytime you hear the term, "you can't lose," I can tell you, you will lose. So I did. And sure enough, as you probably can anticipate, the stock cratered. It did horribly. Why? Because I telescoped my feelings into the here and now. And when we do that, we are inordinately made to think only of the here and now. And you know, smartphones aren't helping us, right? So, you know, I'm glad I don't see too many people on their smartphone, but it is reducing our attention span from quarters to quarter of seconds, right? तो इस क्लिप में जेम्स ने रीसेंसी बायस के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया है। रीसेंसी बायस एक साइकोलॉजिकल फिनोमिनन है जिसमें हम रीसेंट इवेंट्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई आपसे पूछे कि 5 टीवी शोज के नाम बताइए तो इस बात के बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आप उन्हीं 5 शोज के नाम बताएंगे जो आपने रिसेंटली देखे। अगर हम इन्वेस्टिंग में इस कॉन्सेप्ट की बात करें तो हम अक्सर स्टॉक के रीसेंट क्वार्टर या रीसेंट ईयर की परफॉर्मेंस और नंबर्स पे ज्यादा फोकस करते हैं और उसी प्रकार अपने इन्वेस्टिंग डिसीजंस लेते हैं। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि अगर हम लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखें तो 1 साल बहुत छोटा टाइम फ्रेम होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप आज एयरलाइन इंडस्ट्री के किसी स्टॉक को एनालाइज कर रहे हैं और इसके पिछले 1 साल की परफॉर्मेंस के हिसाब से ही अपने डिसीजंस लेते हैं तो शायद आप सही डिसीजंस नहीं ले पाएंगे, क्योंकि पिछले 1 साल में पैंडेमिक ने इस सेक्टर को बहुत ज्यादा अफेक्ट किया है। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि ये एक शॉर्ट टर्म फैक्टर था और अब सिचुएशन इंप्रूव हो रही है। इसलिए आपको रीसेंसी बायस को अवॉइड करके कंपनीज को लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से एनालाइज करना चाहिए। चलिए अब सेकंड क्लिप को देखते हैं। Availability bias is how easy do we remember something, right? So if we're watching the TV news and a terrorist attack happens, guess what we get afraid of? We get afraid that we're going to die in a terrorist attack, even though if you look statistically, the chances of that happening are virtually non-existent.
इस क्लिप में ऑथर ने अवेलेबिलिटी बायस के कॉन्सेप्ट को समझाया है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम कुछ भी डिसीजन लेने से पहले बहुत सारे फैक्टर्स को कंसिडर करते हैं, लेकिन अवेलेबिलिटी बायस के अनुसार हम उस फैक्ट को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं जो हमारे सामने हो, यानी कि जो इजीली अवेलेबल हो। फॉर एग्जाम्पल, सपोज आप किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले 10 अलग अलग फैक्टर्स को देखते हैं और उनमें से एक फैक्टर है कंपनी का ईयरली रेवेन्यू। अब अगर आप अपने टीवी या स्मार्टफोन पर उस कंपनी के रेवेन्यू से रिलेटेड कोई पॉजिटिव न्यूज देखते हैं तो चांसेस हैं कि आप उस कंपनी के स्टॉक को उसी टाइम बाय कर लेंगे। हालांकि दूसरे 9 फैक्टर्स भी उतने ही इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन क्योंकि रेवेन्यू की न्यूज आपके सामने इजीली अवेलेबल थी, इसलिए आपने इसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हुए अपना डिसीजन बना लिया। और आजकल सोशल मीडिया की वजह से इंफॉर्मेशन बहुत जल्दी अवेलेबल हो जाती है, इसकी वजह से भी हम कई बार गलत डिसीजंस ले लेते हैं। तो जेम्स के अनुसार हमें इन्वेस्टिंग करते टाइम अवेलेबिलिटी बायस को अवॉइड करना चाहिए और अच्छे से रिसर्च करने के बाद ही अपने इन्वेस्टिंग डिसीजंस लेने चाहिए। चलिए अब थर्ड क्लिप को देखते हैं। What's a base rate? Real simple, batting average. How often does this particular strategy beat its benchmark, and by how much, right? So in the case of, this is our value composite, which uses 5 separate value factors. In the case here, we see that in any 3-year period, we have a 73% chance historically of doing better than the benchmark. Now, what does that mean? It means that we know going in that in every 10-year period, we're going to underperform 3 of those years. So we take a very much more clinical, if you will, aspect to the way we choose to invest, in that we go in accepting the fact that we're going to fail and knowing by about how much. But to get odds like these on your side is very exciting, and yet people refuse to pay attention to base rates. Here's a great story. And I, sort of being very logical and rational, I just can't figure out why people won't do this, but they don't. And it concerns a town, right? It's 100,000 in the town. 70,000 are lawyers, 30,000 are engineers. When you just give no information at all, right? And you have a person pick 10 names out of a barrel, and you say, okay, how many are lawyers and how many are engineers? Everybody guesses the same way. They say, well, I'm going to say they're all lawyers. That way I'm going to get at least 7 right. And they've done this experiment. This one was reproducible. They've done this number of times, always comes out the same. Next, so they pay attention to the base rate. Next, they add meaningless descriptive information. Tom is 33 years old, wears glasses, and likes to ride his bike to work. People start thinking, I can't see a lawyer wanting to ride his bike to work. I know that I shouldn't, but I'm going to say that he is an engineer. And they basically, just on meaningless information, allow huge mistakes to start entering their forecast. Then, finally, they give stereotypical information. Frank is 34 years old, shy, likes mathematical puzzles, spends weekends on his computer, and really, really hates parties. And so everyone says, I don't care if it said that there were 99,000 lawyers and 1,000 engineers, this guy's an engineer. No, he wasn't. He was a lawyer. And because the base rate said that that's what he had to be. So base rate information is vital when you're trying to manage money effectively over long periods of time. जैसा कि आपने देखा कि जेम्स ने बेस रेट फैलेसी के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया है। बेस रेट फैलेसी एक साइकोलॉजिकल फिनोमिनन है जहां इन्वेस्टर बेस इंफॉर्मेशन यानी कि जो यूजफुल इंफॉर्मेशन है उस पे फोकस ना करके कुछ ऐसी न्यूज या इंफॉर्मेशन के हिसाब से अपने डिसीजंस ले लेते हैं जो इतनी रेलेवेंट नहीं होती। सपोज किसी कंपनी के फंडामेंटल बहुत स्ट्रांग है,
कंपनी का मैनेजमेंट भी काफी अच्छा है और कंपनी पिछले कुछ सालों से अच्छे रिटर्न्स भी दे रही है। लेकिन अधिकतर इन्वेस्टर्स ऐसे फैक्टर्स के बेस पे अपना इन्वेस्टिंग डिसीजन लेते हैं जो उस कंपनी के फंडामेंटल्स और बिजनेस को अफेक्ट नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, रिसेंटली चल रहे रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट की वजह से इक्विटी मार्केट्स में बहुत बड़ा क्रैश देखने को मिला है। लेकिन आपको अपने आप से ये पूछना चाहिए कि क्या उससे कंपनीज के फंडामेंटल्स यानी कि बेस इंफॉर्मेशन पे कुछ इंपैक्ट पड़ा या नहीं। लेकिन ऐसा ना करते हुए मैक्सिमम लोग बेस रेट को भूल जाते हैं और ग्रीड या फियर की वजह से बाय सेल डिसीजंस ले लेते हैं। तो कंक्लूजन यही है कि हमें बेस इंफॉर्मेशन को अवॉइड नहीं करना चाहिए। चलिए अब फोर्थ क्लिप को देखते हैं। So I love this quote too. Charlie Munger, you don't want to believe in luck, you want to believe in odds. I think this is one of the more important things that I want to tell you about. Because we live in a world where people believe more in possibilities than they believe in probabilities, as crazy as that sounds. What's possible? Okay, what's possible? I flew out of JFK to come here. Very possible my plane crashes. Very possible that I make it on the plane, but then the Uber driver gets into an accident and I get killed. Very possible that somebody decides they're going to mug us when we're walking to dinner. Very possible that all these horrible things could happen to me. Well, people who think in terms of possibilities, what are they going to do? They're never getting out of bed, right? It's just like the only good thing that could potentially happen to them is they could win the lottery. And as Fran Lebowitz loves to say, your chance of winning the lottery or not is the same whether you buy a ticket or not. So that's the good thing. Everything else is bad, right? इस क्लिप में जेम्स ने प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटी के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया है। हमें इन्वेस्टिंग करते समय पॉसिबिलिटी से ज्यादा प्रोबेबिलिटी पर यकीन करना चाहिए, क्योंकि प्रोबेबिलिटी में हम डेटा को भी कंसिडर करते हैं। चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज किसी कंपनी का पी रेशियो अपनी इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा है। अब अगर मैं आपको बोलूं कि क्या ये स्टॉक अगले 1 साल में डबल हो सकता है, ये पॉसिबल तो है, लेकिन अगर हम इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी की बात करें तो इसके चांसेस बहुत कम है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये कंपनी ऑलरेडी अपने पियर्स के कंपैरिजन में प्रीमियम पे ट्रेड कर रही है और ऐसे में यहां से इसका अगले 12 महीनों में डबल होने की प्रोबेबिलिटी लोअर साइड पे होगी। इसलिए इन्वेस्टिंग करते समय हमें हमेशा पॉसिबिलिटी की बजाय प्रोबेबिलिटी पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए और उसी के हिसाब से अपने इन्वेस्टिंग डिसीजंस लेने चाहिए। चलिए अब इस वीडियो के लास्ट क्लिप को देखते हैं। Unless you as an investor, if you're doing it yourself, or the person that you hire to do it for you, has unwavering discipline. And I got to tell you, having been there many, many times, this is really easy to say, and it is really, really hard to do. You know, when things are going your way, right, you are the cock of the walk. Of course, it's 500 basis points of its benchmark. You know, we've got the greatest strategies in the world. And you're feeling so good that if you had a song, the lyrics would be, or the title would be, "The future's so bright, I gotta wear shades," right? I mean, you're loving life. But as is the case in all active managers, the one thing I can tell you is you are going to underperform, sometimes by a lot. That's when you have to have discipline. इस क्लिप में जेम्स ने ये बताया है कि इन्वेस्टिंग में अच्छे रिटर्न्स अर्न करने के लिए आपको डिसिप्लिन मेंटेन करना होगा। सपोज आपने अगले 10 सालों के लिए कोई स्ट्रैटेजी बनाई है और पास डेटा के अकॉर्डिंग वो स्ट्रैटेजी लॉन्ग टर्म में हमेशा प्रॉफिटेबल रहती है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि शुरुआत के कुछ 2 से 3 साल तक आपका पोर्टफोलियो उतना अच्छा परफॉर्म ना करे या वर्स्ट केस में इवन इंडेक्स तक को बीट ना कर पाए। ऐसे में आपके पियर्स आपकी स्ट्रैटेजी पे डाउट करेंगे और आप भी थोड़ा एम्बैरस फील कर सकते हैं। ऐसे में अपनी स्ट्रैटेजी पे ट्रस्ट करना और डिसिप्लिन रहना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन आपको ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि आपने ये स्ट्रैटेजी लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई थी और इसलिए आपको डिसिप्लिन और पेशेंस के साथ एक्ट करना होगा और इसलिए शॉर्ट टर्म में अपने पोर्टफोलियो की परफॉर्मेंस को देखकर आपको अपनी स्ट्रैटेजी चेंज नहीं करना चाहिए और डिसिप्लिन बनाए रखना चाहिए।
तो इस प्रकार हमने इस वीडियो में बहुत कुछ इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स को समझा। हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये वायरल रिएक्ट कैसा लगा और क्या हमें इस प्रकार के और वीडियोस बनाने चाहिए। हम आपको याद दिला दें कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए हैं और किसी भी तरह की कोई बायस सेल रिकमेंडेशन नहीं है। हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि ग्रो का टेलीग्राम पे भी एक चैनल है जहां आप मार्केट के लेटेस्ट अपडेट्स, इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स और न्यूज के बारे में जान सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है, तो आप उसको भी जरूर ज्वाइन करें। मार्केट के बारे में लेटेस्ट अपडेट्स के लिए ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.